morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying a very interesting poem, that is Dreamland. So let's just begin with this. And I hope you all are taking care of your health and you must all have been studying very properly at your places. So let's just begin with this poem. So the title of our poem is Dreamland, right? As we all know, what is Dreamland? A land which is like a dream of everyone, that I have to go there, I have to go there, like this. Okay, so you'll be reading and enjoying this interesting poem. So as I watch you sleeping, जैसे मैं तुमको देखता हूँ सोते हुए, I pray sweet dreams fill in your head. जो मैं कुछ मीठे मीठे सपने जो सोते हुए देखता हूँ, मेरा दिमाग उन्हीं सब चीजों से फिल रहता है. एंड योर हार्ट सोर्स हाई ऑन एंजल्स विंग. हाई ऑन एंजल्स विंग मीन्स धड़कता है बहुत ही ज्यादा तेज तेज. एज यू लाई क्वाइटली इन बेड, जब आप बेड पे आराम से सोते हैं. मे यू ड्रिफ्ट ऑफ टू अ लैंड, भगवान करे कि आप ऐसे लैंड पे पहुंचे विच इज फुल ऑफ इंचांटमेंट एंड डिलाइट, जहाँ पे क्या हो, बहुत ही ज्यादा इंचांटमेंट मीन्स बहुत ही ज्यादा खुशी वाला इन्वायरमेंट हो, और डिलाइट मीन्स वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड. वेयर एवरी रेनबो हैज अ पॉट ऑफ गोल्ड, की हर रेनबो ऐसा हो कि वो सोने से चमकता हुआ भरा है. एंड ग्लिस्निंग इन द ब्राइट सनलाइट, और वो सनलाइट में क्या हो रहा है, चमक रहा है. अ प्लेस वेयर हॉर्सेस नेवर स्टम्बल, की यहाँ पे कभी भी हॉर्सेस बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर ना ही शो करे, राइट. एंड राइडिंग ब्रेवली ऑन द वाइट सीड्स और वाइट स्टेड्स, और वाइट स्टेड्स मीन्स सफेद मोतियों के ऊपर जैसे ब्रेवली चल रहे हो. एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, और कुछ भी ऐसा ना हो जो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो, जिसको आप नहीं कर सकते. एज लॉन्ग एज यू बिलीव, जब तक आप बिलीव करते हैं. बट शुड अ घोस्ट और डेमन, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके सपने में एक घोस्ट आ जाए, कोई भूत आ जाए. एवर डिस्टर्ब योर पीसफुल स्लीप, कि आपकी पीसफुल स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है. नोइंग दैट आई विल बी योर बायस, आई विल बी योर बाय योर साइड, कि मैं हमेशा आपकी साइड रहूंगा. टू स्ले इट एट योर फीट, की मैं आपकी फीट के पास हमेशा आपके पाँव दबाते हुए रहूंगा. एंड देन आई विल होल्ड यू क्लोज, और मैं आपको आराम से प्यार से I'll be very close to you and rock you gently in my arms, and I will hug you and give you a warm hug in your arms, and until you are safely back in the dreamland, कि आप वापस अपने ड्रीमलैंड में ना आ जाएं with all the magic and all the charms. उसी चमचमाहट से, बहुत ही ज्यादा जादुई जप्पी, और charm means very you can say very charming, right. And this poem has been written by Lion C. Johnston. Moving on to the word basket, the very first word is SARS, means fly high in the sky. Sky में ऊपर, बहुत ही ज्यादा ऊपर उड़ना. Drift off means fall asleep, means थोड़ी थोड़ी नींद आना. Enchantment means charm and attraction, means आपकी तरफ लगाव, आकर्षित होना. Glistening means of course it's shining and gleaming. Stumble means slip or fall, गिर जाना, right. Stead is the horses, and demons are the evil spirit. And slay means किसी को मारना, right. Moving on to the exercise, first we'll be completing the oral exercises where we'll be learning how to pronounce each word correctly. The first word is dreams, next is stars, then the next one is angels. Moving on to the next is quietly, right. Then it's enchantment, then it's stumble, and then peaceful, and then dreamland. Moving on to the correct answer, I play sweet dash fill with our head, that is sweet dreams, right. And your heart soars high on angels wings, right. नथिंग इज इम्पॉसिबल एज लॉन्ग एज यू बिलीव, जब तक आप बिलीव कर रहे हैं कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आप बिल्कुल भी ना कर पाए. बट शुड अ डैश एवर डिस्टर्ब योर पीसफुल स्लीप, दोनों हो सकते हैं, गोस्ट भी हो सकते हैं और डेमन भी हो सकते हैं. एंड अंटिल यू आर सेफली बैक इन योर ड्रीम लैंड, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू complete the lines. And as I dash, what, as I watch, as I watch you sleeping, right. And dash head, that is I pray sweet dreams fill your head, right, right. I pray sweet dreams and dash, and your heart stars high on angels wings, right. And dash bed, and as you light quietly in bed, right. Then next is a place, कैसी place हो, a place where horses never stumble,
right? And basically what riding dash states that is riding bravely on white steads, right? And what, and nothing is impossible, ऐसा कुछ भी नहीं है जो impossible है, right? And dash believe, and as long as you believe, right? And then I will what, then I'll hold you close and rock you gently in my arms, right? And until, जब तक आप safer feel ना करें, until you are safely back in dreamland, right? देखिए हम ड्रीमलैंड को ज्यादा फोकस करें, दैट इज द ओनली रीजन इट्स अ प्रॉपर नाउन, इसलिए डी कैपिटल आ रहा है, राइट? एंड विद ऑल इट्स मैजिक एंड इट्स चार्म्स, राइट? Right, moving on to the match the column. So may you drift what, may you drift to a land, okay, which is full of enchantment and full of delight, where every rainbow, जहाँ पे हर एक रेनबो एक सोने की जैसी लगे, has a pot of gold, right? Glistening in what, in the bright sunlight, right? But should a dash, it could be a ghost or a demon, right? And never disturb your peaceful sleep, right? Moving on to the answer the following questions. Please do all these question answers respectively by your own in your respective notebooks. And I hope you all loved this poem. This poem was actually about basically you have learned about this poem. Please go through this poem and learn all the word meanings. And please, apart from that, if you came across any other word, please write down in your notebooks and you can ask whenever you feel like. And please stay blessed. Thank you.